Hello guys, welcome back to our channel and we are back into the mountains। और आज हमारा डेस्टिनेशन है एक बहुत ही सुंदर ट्रैक जो कि है नाग टिब्बा। नाग टिब्बा उत्तराखंड स्टेट के लेसर हिमालय की हाईएस्ट पीक है एंड इट इज़ प्रेजेंट एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 9,915 फीट। नाग टिब्बा पीक पर पहुंचने के लिए 3-4 रूट्स हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है पंतवाड़ी विलेज से। यू कैन सी द होल ट्रैक मैप इन दिस पिक्चर, दैट इज़ देहरादून, मंसूरी, नैनबाग, देन पंतवाड़ी। और पंतवाड़ी विलेज इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रैक। हम लोगों ने चंडीगढ़ 43 सेक्टर से बस ली देहरादून के लिए और रात हमने देहरादून स्टे किया एंड आफ्टर दैट वी स्टार्टेड आवर जर्नी इन द मॉर्निंग टुवर्ड्स मसूरी। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो तो मसूरी तक आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा खासा मिलेगा, लेकिन मसूरी के बाद जब आपने पंतवाड़ी विलेज पहुंचना है then frequency of the local buses is not that great. So guys, we have reached Pantwadi. Now we're gonna start our trek. It's a 8 kilometer trek. But आज के लिए हम सिर्फ नाग टिब्बा बेस कैंप तक जाएंगे, जो यहाँ से अराउंड 4 to 5 किलोमीटर्स के अराउंड है। और टोटल ट्रैक डिस्टेंस लगभग 8 किलोमीटर के अराउंड है और दिस ट्रैक कैन बी इजली डूएबल इन 2 days। जहाँ तक ट्रैक ट्रेल की बात है तो अप टू नाग टिब्बा बेस कैंप इट इज़ वेल डिफाइंड। हम लोगों ने लगभग 12-1 बजे स्टार्ट किया था पंतवाड़ी से और हम नाग टिब्बा बेस कैंप लगभग 5 बजे के अराउंड पहुँच चुके थे। तो एक और इम्पॉर्टेंट टिप, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं तो स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल फ्रॉम मसूरी, बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्ट आफ्टर मसूरी इज़ नॉट रिलायबल एट ऑल एंड यू हैव टू रिलाई ऑन द लोकल टैक्सीज। तो गाइज, अगर हम बात करें अपने फर्स्ट डे ऑफ ट्रैक की तो इट वाज एन ईजी ट्रैक अप टू द नाग टिब्बा बेस कैंप, दैट इज़ टोटल डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। अगर हम अकोमोडेशन की बात करें तो गाइस, रास्ते में आपको कोई भी अकोमोडेशन एज सच नहीं मिलेगा, तो इसके लिए या तो आप अपने खुद के कैंपिंग गियर्स लेके जा सकते हो, नहीं तो आपको नीचे से यानी कि पंतवाड़ी विलेज से ही कैंपिंग गियर्स रेंट पे लेने होंगे। फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप जो भी ट्रैकिंग गियर्स हैं वो पंतवाड़ी से ही रेंट पे लें। आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं इस ट्रैक की, लेकिन आई फेल्ट दैट देयर कैंप साइट्स आर टू क्राउडेड। इस ट्रैक के लिए जो भी मैंडेटरी ट्रैकिंग गियर्स हैं उस सब की लिस्ट मैंने वीडियो के एंड में डाल दी है, यू कैन चेक दैट वन।
नाउ दिस इज़ द सेकेंड डे ऑफ द ट्रैक गाइस, और आज हमारा प्लान है कि हम रेस्ट जो 3 किलोमीटर का ट्रैक है नाग टिब्बा तक का वो हम कवर करेंगे और उसके बाद सीधा 8 किलोमीटर डिसेंड करेंगे पंतवाड़ी। गाइस, ऑल्दो नाग टिब्बा ट्रैक इज़ एन ईजी टू मॉडरेट ट्रैक, लेकिन आज का जो डे 2 का हम 3 किलोमीटर ट्रैक करेंगे उसमें से लास्ट का जो 2 किलोमीटर का ट्रैक है वो काफ़ी स्टीप एसेंट है अप टू द नाग टिब्बा पीक। So guys, finally we have reached the Nag Tiba peak, and here you can witness the 360-degree panoramic view of the Himalayas. Guys, here you can witness the terrific view of Himalayan ranges of Swargrohini, Bandeir Poonch, Kala Nag and Gangotri. Guys, after spending 1 to 1.5 hours at the peak, we are now descending towards Pantwadi village. So this is all about our Nag Tiba trek guys. If you have any query, then you can ask us in the comment section. You can follow us on the Facebook and don't forget to subscribe. So in the end guys, I just want to say that trek responsibly, bring back your trash and say no to plastic in the Himalayas. If you like this video, please share and subscribe. Till then, keep moving and keep exploring with Exalted Souls.